तो आज है संडे यहाँ पे और आज हम लोग सोचे कि पूरा दिन यूटिलाइज़ करना है क्योंकि वेदर भी काफ़ी क्लियर है अगर आप देखोगे तो। इट्स राइट नाउ 10 o'clock और हम लोग बस पकड़ के डाउनटाउन जा रहे हैं। वहाँ पे पहले वेसल जाएंगे, द वेसल से फिर हाईलाइन पार्क पे चलते चलते टूवर्ड्स चेल्सी मार्केट एंड देन फ्रेंड्स का अपार्टमेंट देखना है इन्हें। और फिर उसके बाद हमारा 1 बजे का लिबर्टी का टिकट भी है, तो उसके पहले ये सब रैप अप करना है। सो लेट्स सी, बिग डे। तो आज हमने फर्स्ट टाइम GoPro निकाला है। सो यूजुअली हम लोग रोज़ शाम को घूम रहे थे क्योंकि वर्क के बाद फिर शाम को घूम रहे थे। तो फिर लो लाइट के बारे में आई वॉज नॉट श्योर अबाउट GoPro, मे बी मैंने अंडर एस्टिमेट किया लो लाइट को। सो आईफोन में ही चल रहा था, लेकिन आज हम लोग दिन में आए हैं, सो आज दिन भर GoPro यूज़ करेंगे। एंड अ बिग शाउट आउट टू Shantanu, Nandi, Rupesh and Rohan for this GoPro. They gifted me this. और वैसे भी फ़ोन का बैटरी पूरा दिन नहीं वाला है। So guys, right now we are at the vessel. तो ये बिल्डिंग एक आर्किटेक्चर ब्रिलियंस है, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो है ये सब स्टेयर्स है। तो स्टेयर्स पे यूजुअली अलाउड होता है, लेकिन अभी बंद है ये क्योंकि आई थिंक रिसेंटली कोई सुसाइड हुआ था यहाँ पे, तो उसकी वजह से 4th सुसाइड था, तो ये बंद हो गया। मेरे को बहुत मज़ा आता अगर ऊपर चलना उनका। Hello, so we are at the Highline Park. As you can see, today it's sunny here in New York, so हमने सोचा चलो Highline Park में थोड़ा सा वॉक कर ले। So as you can see, ये पार्क सिटी के थ्रू जाता है। So if you want to like avoid the noisy traffic and stuff in New York City, then यहाँ आओ, वॉक करो। देखो यहाँ पे प्लांट्स है इतने सारे, it's pretty. एंड काफ़ी लग्जरियस अपार्टमेंट्स भी है। Yes, you can see that behind me, and then you can see this amazing buildings and the skyline. एक तरह का स्काई वॉक बोल सकते हैं। हाँ, जैसे इंडिया में अपने पास स्काई वॉक होते थे, ये भी स्काई वॉक ही है, बस ओपन है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। So it's a must visit place. अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो please come here.
अभी हम लोग का यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन हुआ है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी जा रहे हैं। तो यहाँ के जो क्रूज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। क्या लगता है? देखो शुभम को तो नंगा कर दिया, पूरा जैकेट ही निकाल दिया, बेल्ट भी हाथ में, बेल्ट भी हाथ में आ गया, इमिग्रेशन चेक की तरह कर दिया है। लेकिन अभी शायद हो गया, अभी सिर्फ क्रूज़ पे चढ़ना है। कितना घंटे की क्रूज़ रहेगी? क्या? हाँ अभी हम लोग हैं ब्रुकलिन ब्रिज पे एंड वी आर वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज टुवर्ड्स डम्बो, जो कि ब्रुकलिन में आता है। सो इट्स प्रीटी क्राउडेड हियर। यहाँ पे फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो 100-200 लोग तो आसपास आ ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। अच्छा है, वेदर अच्छा है। हम लोग कब से ब्रुकलिन बीच हो गया, लिबर्टी का क्रूज़ हो गया, कब से चल ही रहे सिर्फ। और अभी हम इस दिन के लास्ट स्पॉट पे पहुंच गए। क्या है रे जगह का नाम? डम्बो। डम्बो नाम का एक नेबरहुड है यहाँ पे। ये स्पेसिफिक जो एक व्यू पॉइंट है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ से मैनहट्टन ब्रिज जो है उसका एक व्यू आता है। और ये कितना फेमस है और कितना फोटोग्राफिक स्पॉट है ये आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि भीड़ देखो आप बस। सो ये ब्रिज का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। After Dumbo, we used the subway to get back to downtown Manhattan from Brooklyn, and we found this nice Mexican restaurant by the name Lucy's just outside the Madison Square Garden. And luckily, we even got the rooftop.
It was the night of Halloween in New York City. And trust me, I have never seen this much crowd on the streets since I came to the States. At just a 10-minute walk from the Oculus, it's the Charging Bull of Wall Street. It is believed that the 16-foot-long sculpture brings luck, prosperity, and a good financial day, but only on one condition. You have to rub the bull in the rear on his testicles, famously known as the bull's balls. After the bull, we headed towards the Brooklyn Bridge for a walk. Brooklyn Bridge is no doubt a to-go place during the daytime, but I would definitely recommend going for a walk at night as well. An evening walk at the Brooklyn Bridge was definitely a good way to end our trip, as tomorrow we are flying out of the New York City. But wait, there was one more place that we had to go before leaving this city. Many people on the internet recommended that this place is not the safest one to visit during night time. So early morning on our last day, we headed to this place, which is mostly referred to as the Joker Stairs. But you won't find this place by its name on Google Maps. So do search for Guasan Stairs. This is the original name of the staircase that was used in the Joker movie. It is impossible to capture this city's vibe and feel in this camera, but I've tried my best to get you as close to this city as possible. Thanks for watching, and don't forget to hit like, share and subscribe.